Good afternoon, friends. So, guys, where were we yesterday? Yes, we were in classroom only, but what we were doing, I think we solved certain problems on issue of shares yesterday. हमने बेसिक 7 एंट्रीज तो उसके पहले के लेक्चर में ही कर लिए थे और अगले 2 एंट्रीज फॉर फीचर एंड री इशू वी completed those entries in last lecture and I think we solved some exam problems. कुछ एग्जाम प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए 4th, 5th, 6th. Yes, let's solve 7th problem now. Question number 7. Online guys, good afternoon. आ गए सब लोग? आज लॉ का लेक्चर इसके पहले का जो था वो थोड़ा लेट था, इसलिए मैंने 5-7 मिनट लेट स्टार्ट किया है. कोई बात नहीं, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं पूरे 2 घंटे पढ़ाऊंगा. प्रॉब्लम नंबर 7th. पेज नंबर 35. Fashion Garments Limited invited applications for issuing 10,000 equity shares of 10 each. The amount was payable as follows: on application 1 rupee, on allotment 2 rupees, on first call 3 rupees, on second and final call 4 rupees. Issue was fully subscribed. Ram, to whom 100 shares were allotted, failed to pay the allotment money and his shares were forfeited immediately after the allotment. Sham, to whom 150 shares were allotted, failed to pay the first call. His shares were also forfeited after the first call. Afterwards, the second and final call was made. Mohan, to whom 50 shares were allotted, failed to pay the allotment and second call. His shares were also forfeited. All the forfeited shares were reissued at rupees 9 per share, fully paid up. Past necessary journal entries in the books of Fashion Garments Limited. December 2021 exam, it was asked for 15 marks. 15 मार्क्स के लिए पूछा था. इसमें वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है क्यों, तो सब्सक्रिप्शन एट पार एंड फुल अलॉटमेंट है. हाँ, लेकिन हर स्टेज पे फॉरफीचर हुआ है. कुछ लोगों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, उसके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए. किसी से फर्स्ट कॉल के बाद पैसा नहीं आया, उसके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद में फॉरफिट हो गए तुरंत. और एक केस है जिसमें फाइनल पेमेंट नहीं आया फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल के बाद शेयर्स फॉरफिट हुए. तो अलग अलग स्टेजेस पे शेयर्स फॉरफिट हुए एंड सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स एंड में री इशू हुए. ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बट एक दो चीजें जो ध्यान में आनी पड़ेंगी सॉल्व करते हो, तो अपन वो ध्यान में लेंगे. वर्किंग नोट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है. लिखो प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 35. प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 35. In the books of Fashion Garments Limited, in the books of Fashion Garments Limited, journal entries. In the books of Fashion Garments Limited, journal entries. Chalo, who joined late? Quickly draw the format beta. 7th problem we are solving. In the books of Fashion Garments Limited, journal entries.
कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। फॉर्मेट बड़ा है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना मार्जिन यूज करने के अलावा। अभी अकाउंट करंट का टॉपिक है, क्या करोगे, क्या चॉइस है? नहीं नहीं, टू द एक्सटेंट पॉसिबल अवॉइड करो लिखना मार्जिन में। लेकिन अब अकाउंट करंट का फॉर्मेट है जैसे मैंने बोला कि अभी डेबिट एंड क्रेडिट क्या करोगे, ऑप्शन क्या है, दोनों पेज पे जाना पड़ेगा और बीच में तो मार्जिन छोड़ोगे तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। हाउ मेनी शेयर्स आर issued by the company? 10,000 and the issue was fully subscribed, full subscription है and subscription at par है। चलो, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट 10,000 shares into rupee 1, 10,000 shares into rupee 1, 10,000 to equity share application account 10,000, being application money received, being application money received, next, equity share application account debit, equity share application account debit, bracket 10,000 shares into rupee 1, that is 10,000, equity share allotment account debit, bracket 10,000 shares into rupees 2, 20,000, two, equity share capital account, bracket 10,000 shares into rupees 3, 30,000, being allotment of shares at par, being allotment of shares at par. On how many shares the allotment money has not been received दिया है प्रॉब्लम में। राम ने 100 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट मनी, तो बचे हुए 9,900 शेयर्स पे पैसा आया है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट 9,900 shares into rupees 2, it will be 19,800, 2, equity share allotment account 19,800,
being allotment money received. अब ध्यान दो, फर्स्ट कॉल अपने को करना है, बट अब फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे होगा? 10,000 पे नहीं होगा, 100 शेयर्स इसके बाद फॉरफिट करने हैं अपने को, तो कॉल करने के पहले ही फॉरफिट की एंट्री करनी पड़ेगी। जो राम के पास 100 शेयर्स है, अब वो जो 100 शेयर्स है राम के पास, जो हम अब फॉरफिट करने वाले हैं, उनकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है गाइज? कॉल्ड अप वैल्यू 3 रुपए, बराबर है। कितनी है कॉल्ड अप वैल्यू? 3। क्यों? तो अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 1 रुपए और 2 रुपए, ऐसे 3 रुपए उसका कॉल हुआ है ना। वो 3 में से पेड कितना है? 1, तो 2 रुपए पेड है ही नहीं, तो शेयर फॉरफिट करने का अलॉटमेंट के बाद तुरंत लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट 100 शेयर्स इंटू ₹3। 3 रुपए ना रे, कैपिटल में 3 रुपए गए ना। 300 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, कितने रुपए मिले? 1 रुपी। सो 100 शेयर्स इंटू ₹1, 100 शेयर्स इंटू ₹1, 100 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ब्रैकेट 100 शेयर्स इंटू ₹2, 200, being being forfeiture of being forfeiture of 100 shares held by Ram, 100 shares held by Ram due to non-payment of allotment money, due to non-payment of allotment money। अब कॉल करो बेटा, कॉल अब कितने शेयर्स पे होगा फर्स्ट कॉल? 9,900 शेयर्स पे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट 9,900 शेयर्स इंटू ₹3, 29,700 to equity share capital account, $29,700 being first call money due, being first call money due। अब शाम ने 150 शेयर्स पे कॉल मनी नहीं पिक किया, तो कॉल मनी कितने शेयर्स पे आएगा? 9,750। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 9750 shares into rupees 3, 29,250, 29,250, 2 equity share first call account 29,250 being first call money received, being first call money received, सेकेंड कॉल में जाने के पहले ये जो शाम के शेयर से 150 शेयर जिसपे फर्स्ट कॉल मनी नहीं आया, ये शेयर्स हमको फॉरफिट करने हैं। अब मेरे को बताओ ये जो शाम के शेयर से कॉल्ड अप वैल्यू कितनी इनकी, 6 रुपए, जिसमें से पेड वैल्यू 3 और अनपेड वैल्यू 3। बोलो एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 150 shares into rupees 6, 150 shares into rupees 6, it will be 900 to forfeited shares account, 150 shares into rupees 3, 3 रुपए मिल गए ना, 1 रुपया एप्लीकेशन का, 2 रुपया अलॉटमेंट के, 450 to equity share first call account, to equity share first call account bracket 150 shares into rupees 3, कितना 450 being forfeiture of being forfeiture of 150 shares held by Sham, being forfeiture of 150 shares held by Sham due to non-payment of first call money, due to non-payment of first call money, अब आप मेरे को बताओ सेकंड कॉल कितने शेयर्स पे करूं, 9750 पे, तो राम के 100 शेयर्स और शाम के 150 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए ना, तो 10,000 में से 250 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए, तो बचे कितने 9750, तो सेकंड कॉल जो है वो 9750 शेयर्स पे ही होगा। लिखो एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 9750 shares into rupees 4, 39,000 to equity share capital account, 39,000 being second call money due, being second call money due, अब इसमें से कितने शेयर्स पे मोहन 50 शेयर्स पे उसने सेकंड कॉल मनी नहीं दिया, वो तो कितने शेयर्स पे पैसा आया 9,700 पे आया। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 975 नहीं 9700 शेयर्स इंटू ₹4 38,800 to equity share second and final call account to equity share second and final call account $38,800 being second call money received. अब ये जो मोहन जी के शेयर्स है 50 शेयर्स जो जिस पे पेमेंट नहीं हुआ सेकंड फाइनल कॉल का उसको फॉरफिट करना है. अब कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है शेयर्स की 10 जिसमें पेड वैल्यू 6 और अनपेड वैल्यू 4. बोलो एंट्री. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ओए कर्नाटक लिख. क्या सोच रहा किसके ख्यालों में मिल जाएगी डिग्री. क्या सोच रहा ध्यान नहीं है तेरा. आज खाना नहीं खाया क्या कि ज्यादा हो गया. ज्यादा हो गया किसके साथ खाया. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 50 shares into ₹10 50 shares into ₹10 500 2 forfeited shares account 50 shares into ₹6 300 A K to B लिख. To equity shares second and final call account to equity shares second and final call account bracket 50 shares into ₹4 200 being forfeiture of 50 shares being forfeiture of 50 shares held by Mohan due to non-payment of second call money. सब मिला के कितने शेयर्स फॉरफिट हो गए 300 100 150 50 300. तो ये सारे के सारे 300 फॉरफिटेड शेयर जो है ना रीइश्यू हुए एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप. तो ये सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू करने 9 रुपए पे. बोलो बैंक अकाउंट डेबिट लिखो. बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 300 shares into ₹9 2,700 forfeited shares account debit तीनों का टोटल करो कितना कितना फॉरफिट किया तुमने. पहले 100 शेयर्स पे 100 रुपए फॉरफिट हुए थे फिर 450 और फिर 300 तो टोटल कितना हुआ 850. So forfeited shares account debit 850 forfeited shares account debit 850
two equity share capital account, two equity share capital account bracket 300 shares into rupees 10. It will be 3000. 2. Capital reserve 550. Being reissue of 300 forfeited shares. Being reissue of 300 forfeited shares. 15 मार्क मिल गए. एकदम सिंपल क्वेश्चन था 15 मार्क के लिए. सिंपल इसलिए लग रहा है कि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है. थर्ड प्रॉब्लम. थर्ड. Sudhir Limited obtained necessary license for manufacture and sale of television sets. As a part of financing the project, 50,000 equity shares of 10 each were issued at par on following terms. On application 3, on allotment 4, first call 2, final call 1. Applications were issued for 60,000 shares. Allotment were made on the following basis: to applicants for 10,000 shares in full, to applicants for 20,000 shares, 15,000 shares, to applicants for 30,000 shares, 25,000 shares. All the excess amounts paid on application to be adjusted against the amount due on allotment. The shares were fully called and paid up except amounts of allotment first and second call not paid by those who applied for 2,000 shares out of the group applying for 20,000 shares. All the shares on which final call were not paid were forfeited by board of directors. 1,000 forfeited shares were reissued as fully paid on receipt of rupees 8 per share. Show the journal entries including those relating to cash. Interesting sum it is. और लगभग सारे पॉसिबिलिटीज कवर होते हैं इस सम में. जानबूझ के मैंने इसको रखा है इस बैच के मटेरियल में. लेट्स सॉल्व. प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर वर्किंग नोट्स. नंबर 1, एप्लीकेशन मनी डिटेल्स. चलो वो 8 कॉलम वाला अपना फॉर्मेट फॉलो करो.
Number of shares applied. Number of shares allotted. Application money received at the rate of rupees 3. Application money on shares allotted. Excess. Appropriation towards allotment money due. Refund. Ready? Ready? Correct, start. First category, full. How many shares are applied? How many shares are allotted? Application money received at the rate of 3. Application money on shares allotted. Any excess? If there is no excess, no question of appropriation, no question of refund. Last 3 columns, nil, nil, nil. Which is the second category? Pro rata. How many shares are applied? How many are allotted? So what is the ratio? 4:3. 4:3. Application money received will be 60. On shares allotted 45. Excess 15. कितने शेयर्स अलॉट हुए? 15,000. और अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितना है? अलॉटमेंट मनी 4. तो 15 4 जा 60,000 आने ना अलॉटमेंट पे, तो 15,000 एक्सेस से तो पूरे एडजस्ट हो सकते हैं. So 15,000 will be appropriated towards allotment money due. Refund will be nil. Last category, pro rata, 30,000, 25,000. ठीक है ना रे, कोई चिल्लाया बाहर तो ऐसे हंसना नहीं उसके ऊपर. प्रकृति का खिलवाड़ होता है कभी कभी. अब इंसान के रूप में अगर ऐसी आवाजें निकालेंगे क्लास के बाहर, तो प्रकृति का खिलवाड़ी बोलेंगे ना उसको, और क्या बोलेंगे? What is the pro rata ratio? 6:5.
और किसी के एबनॉर्मेलिटी पे ऐसे हंसना नहीं चाहिए. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 90,000. एप्लीकेशन मनी और शेयर्स अलॉटेड एक्स्ट्रा. एप्रोप्रिएशन 15,000. रिफंड नील. चलो टोटल लेते हैं. 60, 50, 180, 150, 30, 30. Last one I'll tell you it is nil. क्या हो गया? विदाउट कैल्सी नील. वाह. वर्किंग नोट 2. Allotment money received. Allotment money received. Right hand side corner rupees. उजव्या हाताचा कोपरा. हा कुछ तो बोलते सर ऐसे. तेरे को मराठी आती ना रे? थोड़ी थोड़ी जाती. महाराष्ट्र में ना तू तो यवतमाळ. मराठी बात नहीं करते? अच्छा. मैं आज एक मराठी में इंटरव्यू दे के आया हूँ सवेरे. आज मराठी में ही था वो इंटरव्यू. तो मेरे को वो इंटरव्यू लेने वाले भी बोल रहे थे कि आप इतनी अच्छी मराठी कैसे बोल लेते हैं. तो मैंने, मेरा एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ है 10th तक. तो मराठी तो 10वी पर्यंत मी म्हणलं ना, मी प्युअर मराठी बोलू शकतो एकदम. 10वी पर्यंत माझं शिक्षण मराठी माध्यमातच झालंय. क्या क्या? मराठी बोलने में मजा भी अलग ही रहता है. बहुत मीठी लैंग्वेज है. क्या क्या? अलॉटमेंट मनी ड्यू. तू मेरे साथ मराठी में बात कर, तू सीख जाएगी 15-20 दिन में एकदम अच्छे से. क्या बोला? अच्छा मैं भूल जाऊंगा. छोटा बच्चा बहुत बोलने लग गया है ना. allotment money due. How many shares are allotted? नुसतं 50,000 नको म्हणू. शेअर्सला काय म्हणतात ते सांग मग. नाही, समभाग. शेअर्स आर कॉल्ड इन मराठी as समभाग. आपण इक्विटी शेअर्स बद्दलच बोलतोय ना ढोकळ्या. 50,000 shares into rupees. वो सवेरे इंटरव्यू लेने वाले मेरे को बता रहे थे कि 23 पत्रक ताळेबंद. मैं बोला मैं आत्ताच्या मुलांना जाऊन जर मी हे बोललो तर ते डोक्याला हात लावतील, त्यांना कळणारच नाही काय बोलतायत. 23 पत्रक ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस को मराठी में 23 पत्रक बोलते. ताळेबंद बैलेंस शीट. बैलेंस शीट को ताळेबंद बोलते. डेबिट नावे, क्रेडिट जमा. ₹2 लाख. बापरे क्या बोल रहा. समहक्क भाग. बापरे. जान दे शंकर, जान दे, ज्यादा लोड मत ले. शेयर इक्विटी.
allotment money due 50,000 shares into 4, 2 lakhs. Less appropriation of excess application money. कितना है? बैलेंस बॅलन्सला काय म्हणतात? बाकी बॅलन्स 1,70,000. चलो चलो चलो, अभी देखो क्या लिखा है प्रॉब्लम में, कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया, कैसे कैलकुलेशंस करने, थोड़ा समझो, पढ़ो तो सही. The shares were fully called and paid up, except amounts of allotment, first and second call, not paid by those who applied for 2,000 shares. Out of the group applying for 20,000 shares, बोल तो कौन से कैटेगरी में है? 4:3 में कितने शेयर्स को अप्लाई किया था उन्होंने? अप्लाई 2,000 शेयर्स को किया था. अप्लाई 4:3 रेशियो है, तो अलॉट कितने शेयर्स हुए थे? 1,500 शेयर्स ही अलॉट हुए थे. तो 1,500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है. नॉट ऑन 2,000 शेयर्स, ऑन 1,500 शेयर्स, बिकॉज शेयर्स अलॉटेड वर 1,500. लेस allotment money in arrears on 1,500 shares. रुक जाओ बेटा, 1,500 शेयर्स. पहले मेरे को बताओ 1,500 शेयर्स पे अमाउंट ड्यू कितना हो रहा है? 4 रुपए के हिसाब से बोला तो 6,000 रुपए. लेकिन पूरे 6,000 नहीं आया, ऐसा नहीं है. प्रो रेटा कैटेगरी में है तो कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी आया हुआ है जो अलॉटमेंट का ही है. अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था? अलॉट कितने हुए? तो 500 एप्लीकेशंस पे एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना था? तो 500 इंटू 3, 1,500 रुपए एक्स्ट्रा आए हुए जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुके हैं. बोलते अलॉटमेंट मनी ड्यू 6,000 है, बट 6,000 वैसे भी नहीं आने. 1,500 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 4,500 ही आने थे. समझो समझो, ये पेमेंट आता भी तो 6,000 नहीं आने वाला था, 4,500 ही आने वाले थे, कि तो 1,500 ऑलरेडी मिल चुका है. तो अमाउंट इन एरियर्स विल बी हाउ मच? 4,500. समझा क्या? कैसे कैसे देखो मैं प्रेजेंट करता हूं यहाँ प्रॉपरली. अलॉटमेंट मनी ड्यू, ₹1,500 shares into rupees 4, 6,000 less एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो ये 6,000 के अगेंस्ट में ऑलरेडी मिल चुका है. कैलकुलेशन अपन प्रॉपरली दिखाएंगे. कितने शेयर्स अप्लाई हुए थे, कितने अलॉट हुए? सो 2,000 माइनस 1,500 एप्लीकेशंस इनटू रुपीज, बोलो. आउटर कॉलम therefore
अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बोलो बेटा। 165 500 सबका आया, सबका आया। वर्किंग नोट नंबर 3, कॉल मनी रिसीव्ड। दो कॉल है, एक काम करते हैं कंबाइन बना सकते हैं अपन वर्किंग नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो कॉलम बनाएंगे अपन। फर्स्ट कॉल रुपीज, सेकंड कॉल रुपीज। फर्स्ट कॉल रुपीज, सेकंड कॉल रुपीज। एक मिनट, हाँ, यूट्यूब पे एक डाउट है, फिर से ऊपर वाला ये समझाना है वर्किंग नोट। ध्यान दो बेटा सब लोग, अंश ध्यान दे। ये देखो, 2000 शेयर्स जिसने अप्लाई किए थे, 2000 शेयर्स, वो शेयर्स पे अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं आया है। 2000 शेयर्स अप्लाई किए थे, अप्लाई बोल तो 2000 शेयर्स अलॉट नहीं हुए थे, क्यों? तो दैट शेयर होल्डर बिलोंग्स टू द सेकेंड कैटेगरी वेयर टोटल शेयर्स अप्लाइड वर 20,000। 20,000 शेयर्स अप्लाई किए थे तो अलॉट कितने हुए थे? 15,000। मतलब रेशियो क्या हुआ? 4:3 हुआ। तो 2000 शेयर्स अप्लाई किए तो अलॉट कितने हुए? 2000 शेयर्स अप्लाई किए तो अलॉट कितने हुए? 1500 शेयर्स अलॉट हुए। तो 1500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं आया बोला है। अब 1500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा है? 1500 शेयर्स इंटू रुपीज 4, 6,000 रुपीज। बट ये 1500 शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है जो अलॉटमेंट में ऑलरेडी एडजस्ट करना है अपने को। तो अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किए थे? 2000। अलॉट कितने हुए थे? 1500। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितने हैं? 500। तो 500 एक्सेस एप्लीकेशन पे 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए एक्सेस आए हुए। तो जो 6,000 रुपए अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है ये 1500 शेयर्स पे, उसमें से 1500 रुपए ऑलरेडी अपने को एक्सेस आए हुए हैं। तो अमाउंट इन एरियस विल बी 4,500। तो 4,500 हमने कम कर दिया, बचा हुआ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड है 165 500। एनी प्रॉब्लम? अंश समझाए तो लिख दे बेटा यूट्यूब पे अंडरस्टूड, नहीं समझाए तो वैसे लिख। कॉल मनी ड्यू, look at the screen, 50,000 shares into rupees 2 ऑब्लिक ₹1। फर्स्ट कॉल 2 रुपए का, सेकंड कॉल 1 रुपए का है। लिख के डिलीट कर दिया मैसेज। 1,50,000। 2-3 दिन से मोदी जी नहीं आए, बहुत बिजी है फिलहाल मोदी जी। परसों शिरडी गए थे, हाँ, मुंबई भी थे, बहुत बिजी है मोदी जी अब। ब्रेकअप हो गया किसका? मेलोनी? हु इज मेलोनी? अच्छा वो, ये G20 वाला है। अरे, अरे क्या रे, कुछ भी बोलते हैं यार तुम। ये ले ऑनलाइन में भी बोल रहे मेलोनी से मिलने गए बोले। ये ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे ब्रेकअप हो गया, तू बोल रहा मिलने गए, पैचअप करने गए। Therefore, call money received
97, 48, 500. झालं बाळांनो? सगळे बाळ लिहित आहेत ना? बाळांनो आणि बाळींनो, in the books of Sudhir Limited, journal entries. In the books of Sudhir Limited, journal entries. Draw the format, line मारो फटाफट. यस बेटा, मैं ऑफिस में अवेलेबल करा देता हूँ थ्योरी बुक, जिनको भी चाहिए ऑफिस में से ले लो आप. अरे बाप रे, आ गए मोदी जी. सर कौन क्या बोला मेलोनी जी के बारे में, मुझे बताइए, उनको योगी जी के हाथ में दे देता हूँ. यस, वैसे मोदी जी मुझे मालूम है ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही है मोदी जी. हाँ, ये भी मैं जानता हूँ. कौन है ये भी जानता हूँ मैं, मालूम है क्या? मोदी जी, हाँ. सर मैं बाहर रहता हूँ लखनऊ में. ओ नहीं नहीं, वो थेरी की बुक मैं ऑफिस से लो बोला ना, इसलिए वो बोल रहा है. लखनऊ से अटेंड कर रहे हो? वाह, ठीक है बेटा. मैं उसका पीडीएफ दे देता हूँ, अब उससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है. पीडीएफ में ऐसे ओपनली भेज नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है. मैं तुमको मेरा नंबर शेयर करता हूँ, या मेरा ईमेल आईडी लिख दो, उस पर तुम मेरे को मैसेज करो, मैं तुमको मेल कर देता हूँ चाहिए तो. अपने पास पहले ही बहुत जल्दी कॉपी हो जाती है चीज़ें. हाँ, प्रेस्टीज पॉइंट जिंदाबाद. कुछ नहीं रहता कॉपीराइट वगैरह. कॉपीराइट का क्या है ना, बहुत वो ऐसा जनरल लॉ है, उसमें ऐसा थोड़ा भी चेंज कर दिया तुमने इधर उधर कि कॉपीराइट का कुछ इशू आता नहीं उसमें. कोई बात नहीं, चलो वो डिस्कशन अलग है. इन द बुक्स ऑफ सुधीर लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज. कितने लोग आउट ऑफ पुणे से अटेंड कर रहे हैं बैच? एक जन लखनऊ से है. ये आउट ऑफ पुणे है ना प्रेस्टीज पॉइंट? ये बावले हो गए रे पिछले 4-5 दिन से. बीच में एक दिन गायब था, तब क्या करके आया क्या मालूम. हाँ ना. फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट. चलो 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 फटाफट. बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट 60,000 एप्लीकेशंस, नासिक सांगली, बाहर के बच्चे जा रहे हैं. मैं मैं फेमस हूँ? हो गया? नहीं रे बाप, मैं क्या फेमस, यहाँ क्लासरूम के बाहर कोई पहचानता नहीं है. सीधा साधा गरीब आदमी मैं, सबसे पूरे प्रेस्टीज में सबसे गरीब और सीधा साधा, जिसको कोई नहीं पहचानता ऐसा आदमी एक ही है, सुशील भंडारी. हाँ. बाकी सबका कैसे देख, ऐसे एकदम माहौल है ये अपने.
क्या क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट bracket 60,000 applications into rupees 3, 1,80,000. 2. Equity share application account 1,80,000. Being application money received. Next entry. Equity share application account debit 30,000. Equity share application account debit 30,000 30 to equity share allotment account 30,000. Being appropriation of excess application money towards allotment money due. Towards allotment money due. Next allotment entry. Equity share application account debit bracket 50,000 shares into rupees 3. 50,000 shares into rupees 3. 1,50,000 equity share allotment account debit 50,000 shares into rupees 4. 2 lakhs. 2 lakhs to equity share capital account bracket 50,000 shares into rupees 7. कितना? 3,50,000 being allotment of shares at par. Being allotment of shares at par. Next. बैंक अकाउंट डेबिट 165,500 बराबर. बैंक अकाउंट डेबिट 165,500 to equity share allotment account 165,500 being allotment money received
Then equity share first call account debit, 50,000 shares into rupees 2, 1 lakh. To equity share capital account, 1 lakh. Being first call money due, being first call money due, receive it. Bank account debit, 97,000, 97,000. To equity share first call account, to equity share first call account, बोलो बेटा, 97,000. Being first call money received, being first call money received. Equity share second and final call account debit, equity share second and final call account debit, कितना 50,000. How 50,000? 50,000 shares into rupee 1. To equity share capital account, being second and final call money due, receive it. Entry bank account debit 48,500, bank account debit 48,500 to equity share second and final call account 48,500, being second and final call money received, being second and final call money received. अब सब लोग ध्यान दो बेटा, ये 1500 शेयर्स जो है जिसपे अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं आया, वो 1500 शेयर्स फॉरफिट करने हैं. कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 10 रुपए. लिखो एंट्री. क्या होगी एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, bracket 1500 shares into rupees 10, it will be 15,000 to forfeited shares account, $15,000. सॉरी 2000 एप्लीकेशंस आए थे, 2000 एप्लीकेशंस.
मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपए मिले हुए हैं, तो 6,000 रुपीज फॉरफिट होंगे। 2, amount in arrears, equity share allotment account, how much amount is in arrears on allotment? सेकेंड वर्किंग नोट में जाके देखो, मिल जाएगा। अमाउंट इन arrears is 4,500। 2, equity share first call account 3,000। 2, equity share second and final call account 1,500। बरोबर। being forfeiture of being forfeiture of 1,500 shares being forfeiture of 1,500 shares due to non-payment of allotment and call money allotment and call money। अब ये 1,500 शेयर जो फॉरफिट हुए, इसमें से 1,000 शेयर ही री इशू हुए, पूरे शेयर री इशू नहीं किए, तो सारे कैलकुलेशंस प्रोपोर्शनेटी करने पड़ेंगे तुमको। लास्ट एंट्री गाइज, बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू कितने में हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर्स इंटू रुपीज 8,000 forfeited shares account debit. Look at the screen. How much amount was forfeited? 6,000. But that was on how many shares? ना। If you say 2,000, you are making gross mistake. 2,000 एप्लीकेशंस थे, अलॉटमेंट कितने में थे? 1,500। तो 6,000 रुपीज जो फॉरफिट हुए थे वो 1,500 शेयर्स पे हुए थे, उसमें से हम 1,000 ही री इशू कर रहे हैं, तो 1,000 का अमाउंट रिवर्स होगा ना? बोलो। 4,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,000 shares into rupees, it will be 10,000 to capital reserve 2,000। बरोबर। आया क्या? being reissue of 1,000 forfeited shares, being reissue of 1,000 forfeited shares first problem, page number 34।
Alankit Limited issued at par 2 lakh equity shares of 100 each, payable 25 on application, 30 on allotment, 20 on first call, balance on final call. All the shares were fully subscribed. Mr. Dhawan, who held 40,000 shares, paid full remaining amount on first call itself. The final call, which was made after 3 months from first call, was fully paid except a shareholder having 4,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrears. Company also paid interest on calls in advance to Mr. Dhawan. You are required to prepare journal entries to record these transactions. इस प्रॉब्लम में कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स है और दोनों पे का इंटरेस्ट भी है. रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स आपको याद आना ही चाहिए. मैंने आपको मैंने आपको स्टैटिस्टिकल डेटा लिखा के दिया था इस टॉपिक के एंड में. इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं याद आ रहा है तो रेगुलर बैच का नोटबुक निकाल के चेक करना. बाद में लिखा के दिया था मैंने इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसमें मैंने आपको अलग अलग स्टैटिस्टिक्स दिए थे. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, उसके बाद में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना है, फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टेबल ए. तो ये सारी चीज़ें मैंने तुमको लिखा के दी हुई है. अब वो तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा. अब जैसे इस सब में कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस है और उसके इंटरेस्ट की इंटरेस्ट करनी है. इंटरेस्ट के इंटरेस्ट तुम कर भी दोगे बट इंटरेस्ट कितना देना वो दिया ही नहीं है प्रॉब्लम में. और वो इसलिए नहीं दिया है कि तो फिर वो स्टैंडर्ड जो लॉ में बोला है उतना देना है. अब अगर वो याद नहीं आया लॉ में कितना बोला है तो करने ही नहीं आएगा. तो मैंने लिखा के दिया हुआ है. मिला क्या? अ, है ना? हाँ, कितना है कॉल्स इन एडवांस पे? कॉल्स इन एडवांस पे कितना है? हाँ हाँ, कॉल्स इन एडवांस पे 12% है. कॉल्स इन एरियर्स पे 10% है. कॉल्स इन एरियर्स पे 10% पर एनम है. कॉल्स इन एडवांस पे 12% पर एनम है. तुम्हारे तुमने कैसे टेस्ट दिए रे? जो टेस्ट सीरीज हुई, बोलता मैं कल परसों भी आपको बोला, बोलता बिना पढ़ाई किए फॉर्मेलिटी बोल के टेस्ट दे रहे कह रहे. फिर 2 दिन बाद वापस टेस्ट है ना? क्या पढ़ाई की तुमने? चलो नंबर्स नहीं भी याद आए तो इतना तो याद आना चाहिए कि सर जो बोल रहे हैं वो आपने को दिया हुआ है. वो भी तुम्हारे चेहरे पे लगता नहीं कि तुमने पढ़ा है बोल के. तो क्या फायदा है वो नोटबुक इतनी लिखा के दे के सब करके? मैं डे वन से बोल रहा हूँ ना कि नोटबुक ही तुम्हारा सब कुछ है. एक एक चीज लिखा के दिए यार. ये बैच में भी दिए तो रेगुलर बैच में तो क्या क्या नहीं दिया है. बीकॉम के एटीट्यूड के साथ जाओगे तो फेल हो जाओगे. और क्या है ना कि सीए कोर्स में आने के बाद में अगर वो सिंसियरिटी नहीं आई, पर निकल आया ना कि लगता है अपने को कि 11 12 हो गया वैसे हो जाएगा, कहीं के भी नहीं रहोगे. इतनी कट थ्रोट कंपटीशन है आज मार्केट में, इतने लोग आ रहे हैं हर प्रोफेशन में. अपने आप को अलग अगर प्रूव करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी तुमको. मैं समझ सकता हूँ कि 10% 12% याद नहीं आ रहा है. अरे बट एटलीस्ट लिखा के दिया है वो भी तो तुमको याद नहीं आ रहा बोलने के बाद में. आधे से ज्यादा लोग ऐसे देख रहे हैं मेरे पास जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया. टेस्ट फॉर्मेलिटी बोल के मत दो. वो नोटबुक पढ़ो जो इतनी लिखा के दी है. कितने नोटबुक भरे अकाउंट्स के रेगुलर बैच के? 4. हम्म. हाँ तो फिर वो पढ़ना पड़ेगा ना थ्योरी पार्ट. फिर कंसाइनमेंट में भी मेरे को यही फील आ रहा था जब मैं सिखा रहा था इस बैच में. साला इतना सब सिखा के वो रेगुलर बैच में अगर तुमने पढ़ा ही नहीं तो क्या यूज है उसका? लिखो. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 34. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 34. In the books of Alankit Limited, journal entries. In the books of Alankit Limited, journal entries.
journal entries. I'll start. Draw the format. How many shares are offered? 2 lakhs and all the shares are fully subscribed. तो यहाँ पे भी वर्किंग नोट एज सच कुछ नहीं है बस, लेकिन दिए हुए ट्रांजेक्शन्स में कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स है, तो उसको प्रॉपरली अपने को अकाउंट फॉर करना है. Alankit Limited issued at par 2 lakh equity shares of 100 each, payable 25 on application, 30 on allotment, 20 on first call and balance on final call. 100 रुपए है एट पार इशू हुआ है, 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे. 25 प्लस 30 प्लस 20 75 एंड रिमेनिंग ऑन फाइनल कॉल. बोल दो फाइनल कॉल कितने का होगा? 25 रुपीज का होगा. 100 में से 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 20 रुपए फर्स्ट कॉल, तो बचा हुआ अमाउंट 25 रुपीज पर शेयर बचता है, विच विल बी ऑन फाइनल कॉल. ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड. लिखो फर्स्ट एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट 2 lakh shares into rupees 25, 2 lakhs into rupees 25, it will be 50 lakhs to equity share application account. Being application money received. Let's make the allotment. Equity share application account debit, equity share application account debit, bracket 2 lakh shares into rupees 25, $50 lakhs equity share allotment account debit, bracket 2 lakh shares into rupees 30, it will be
60 lakhs. To equity share capital account, bracket 2 lakh shares into rupees 55, 1 crore 10 lakhs, 1 crore 10 lakh. Being allotment of shares at par, being allotment of shares at par. अलॉटमेंट मनी मिल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 60 lakhs 60 to equity share allotment account 60 lakhs. Being allotment money received. Let's make a call. Equity share first call account debit. Equity share first call account debit. Bracket 2 lakh shares into rupees 20. 40 lakhs. To equity share capital account 40 lakhs. Being first call money due. Now I want full attention here. फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितना हो रहा है? 40 लाख रुपए. कितने शेयर्स पे? 40 लाख. 2 लाख शेयर्स पे. अब सब लोग जरा प्रॉब्लम पढ़ो क्या दिया है. मिस्टर धवन हु हेल्ड 40,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ. पहले कॉल के साथ में उसने बचा हुआ पूरा पेमेंट दे दिया. क्या बच गया फर्स्ट कॉल के बाद? फाइनल कॉल. तो फाइनल कॉल पर शेयर कितना है? 25 है. तो वो 40,000 शेयर जो धवन के पास है उसके ऊपर उसने फाइनल कॉल की अमाउंट 25 रुपए पर शेयर की वो भी पहले ही दे दी. तो उतना ही एडवांस है ना? यस. मैं बोलता हूं उतना लिखो. नेक्स्ट एंट्री मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही लिखना. बैंक अकाउंट डेबिट. लुक एट द स्क्रीन. कीप इट ब्लैंक. टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40 lakhs. तो पूरा है ना? टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ब्रैकेट 40,000 shares into rupees 1 lakh. Sorry, 10 lakhs.
बहुत बड़े अमाउंट्स हो गए कि समझते नहीं ना रे मेरे को। बोला ना मैं गरीब आदमी। टोटल डेबिट कितना? 50 लाख। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, being first call money received along with along with calls in advance along with calls in advance on 40,000 shares held by Mr. Dhawan, along with 40 along with calls in advance on 40,000 shares held by Mr. Dhawan। हो गया। 3 महीने बाद सेकंड कॉल हुआ। लिखो, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 2 lakh shares into rupees 25, 2 lakh shares into rupees 25, 50 lakhs, to equity share capital account 50 lakhs, to equity share capital account 50 lakhs, being second call money due, being second call money due, सब लोग एक बार प्रॉब्लम में दी हुई इंफॉर्मेशन फिर से पढ़ो तो। Final call which was made after 3 months from first call was fully paid except a shareholder having 4,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in advance, calls in arrears। 4,000 शेयर्स पे कॉल अमाउंट मिला नहीं है। बोल तो कितने शेयर्स पे मिला? 1,96,000। बट 1,96,000 में 40,000 पे एडवांस में आया हुआ है, तो अभी कितने शेयर्स पे मिलेगा? 1,56,000 पे। मैं लिखता हूं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 1,56,000 shares into rupees 25। बोलो 39 lakhs। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब कॉल मनी ड्यू हो गया है तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना कॉल्स इन एडवांस। 40,000 शेयर्स इंटू रुपीज 25, 10 लाख। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 4,000 shares into rupees 25। बोलो 1 lakh, 2 equity share second and final call account 50 lakhs, 50 लाख, being second call money received
अब अपने को कॉल्स एंड एडवांस पे इंटरेस्ट देने का है। मेरे को बताओ कॉल्स एंड एडवांस मिले कब थे? फर्स्ट कॉल के साथ में। और सेकंड कॉल ड्यू कब हुआ? 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स। तो 3 महीने के लिए कॉल्स एंड एडवांस तुम्हारे पास थे, तो 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। And as I said, as per model articles of association given in Companies Act 2013, rate of interest on calls in advance is 12% per annum, whereas on calls in arrears it is 10% per annum. So let us first pay interest on calls in advance. Interest on calls in advance account debit. I'll show the calculations in bracket. What was the amount of calls in advance? 10 lakhs into 12% into 3 by 12. It will be 30,000 to bank account 30,000 being payment of interest on calls in advance, being payment of interest on calls in advance. अब वो कॉल्स इन एरियर्स along with इंटरेस्ट मिले कब मिले? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद की एंट्री लिखेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट, keep the amount blank, bank account debit, keep it blank, टू कॉल्स इन एरियर्स कितना है? कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट 1 लाख, टू interest on calls in arrears. I'll show the calculation in bracket. Rupees 1 lakh into 10% into 2 by 12, 2 महीने बाद पैसा मिला 11667, total debit 1,01,667, being receipt of calls in arrears, being receipt of calls in arrears along with interest at the rate of 10% per annum, along with interest at the rate of 10% per annum. Done? और 2 एंट्रीज है। कॉल्स एंड एडवांस पे का जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है कंपनी के लिए, इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स इनकम है, वो भी पी एंड एल में जाएगा। लिखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट अरे नहीं वो एक्सपेंस है ना, सॉरी 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 सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1667
interest on calls in arrears account debit 1667 to profit and loss account 1667 being interest on calls in arrears being interest on calls in arrears credited to profit and loss account credited to profit and loss account. Last entry. Profit and loss account debit. Profit and loss account debit 30,000 30,000 to interest on calls in advance account to interest on calls in advance account. $30,000 ऑब्वियसली जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा ना। मैं बोला ना मैंने अमाउंट 30,000 30 being being interest on calls in advance debited to P&L account being interest on calls in advance debited to profit and loss account. Last sum second इस टॉपिक का लास्ट सम आज का लास्ट सम नहीं बोला मैंने इस टॉपिक का लास्ट सम बोला मैंने चलो सेकंड सम Samuel who was the holder of 12,000 preference shares of 100 each on which 75 per share has been called up could not pay his dues on allotment and first call at 25 per share. The directors forfeited the above shares and reissued 10,000 of such shares to Mr. Robert at rupees 65 per share paid up as 75 per share. दो ही एंट्रीज है बट दो एंट्रीज बहुत यूनिक है ये क्या है ना इसमें 100% आप गलती करोगे एक काम करते हैं मैं टाइम देता हूं आपको चलो दो ही एंट्रीज है पहले फॉर फीचर और फिर इशू ट्राई करो मैं कंफर्म करता हूं एग्जाम में आया था कौन से अभी टेस्ट सीरीज में देखते चलो ऑनलाइन आप भी करो मीटिंग एग्जिट नहीं करना करो बोला कि जिनको पास होना है वो करो सॉल्व there are two entries only first entry for forfeiture next entry for reissue करो कोशिश आएगा और पढ़ो बराबर सम को पढ़ने आता है ना सम ये भी नहीं बोल रहा सुनाई भी नहीं दे रहा
अरे श्रेया, डिस्टर्ब मत कर सबको, लिख। हो गया? What was the face value per share? 100. But what was the called up value per share? 75. Out of that, application money was 25. Allotment money was, and first call was 25. What was paid? Only application money was paid. So allotment and first call was not paid, and shares have been forfeited after first call. पहले कॉल के बाद में ही शेयर्स फॉरफिट हुए हैं. चेक द फॉरफीचर एंट्री. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. Bracket. How many shares are there? 12,000 shares into rupees 75. 9 lakhs. कॉल्ड अप वैल्यू. मैंने फेस वैल्यू पूछी थी कितना है. मैंने 100 बोला ही नहीं. मैंने फेस वैल्यू पूछा था जो 100 था. उसमें से कॉल्ड अप वैल्यू 75 है. तो जितना कॉल्ड अप है उतना ही कैपिटल को क्रेडिट हुआ है ना. तो वही रिवर्स करेंगे ना रे. गुड मॉर्निंग. 2. forfeited shares account. 12,000 shares into rupees 25. 3 lakhs. आया क्या?
टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी 3 लाख ही है। टू preference share first call account 3 lakhs. How many of you got it correct? जिन लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया उनका कुछ नहीं हो सकता। गलत हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्शन हो जाएगा, बट सॉल्व ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। गलत तो गलत ट्राई करने आना चाहिए। मंगा बेटा किया गया। चुकला का बरोबर आलं, करेक्शन कर ना मग। केले तू इतना टेंशन में क्यों रहती है? बीइंग नरेशन being forfeiture of shares due to non-payment of allotment and first call money, due to non-payment of allotment and first call money। अब री इशू में क्या धिंगाना होने वाला है? ये शेयर्स री इशू किए कितने? 10,000 10,000। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 shares into rupees 65, 6,50,000। forfeited shares account debit क्या हो गया? 10,000 shares into rupees 25, पर शेयर 25 रुपए फॉरफिट हुए थे ना, 2,50,000। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 shares into rupees 2 कैपिटल रिजर्व फेस वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस शेयर्स की? फेस वैल्यू 100 रुपए, but those are not reissued as fully paid, those are reissued as rupees 75 paid, लिखा है specific। 10,000 of such shares to Mr. Robert at 65 per share, paid up as rupees 75 per share। तो जो रीइश्यू है उनका पेड अप वैल्यू 75 रुपए है, तो इट विल बी 7,50,000 and to capital reserve 1,50,000, being reissue of
10,000 forfeited shares, being reissue of 10,000 forfeited shares. Done? All of you got it? Yes, with this we finish with this topic. ये टॉपिक कंप्लीट हुआ. वैसे आज सोचा था कि आधा घंटा मिलेगा तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स अपन स्टार्ट कर देंगे. कोई बात नहीं. 8 मिनट्स आर रिमेनिंग. 8 मिनट के लिए टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे अपन. यस. नहीं ना बेटा, तुम घड़ी भी नहीं समझते क्या? 4:30 बजे का टाइम मत देखो. तुम्हारा लॉ का लेक्चर था इसलिए मैंने स्टार्ट लेट किया था. वी स्टार्टेड एट 2:38. तो ऑफिशियली माई लेक्चर इज स्टिल 4:38. हाँ. सो सो पॉइंट इज, कोई बात नहीं, ये मेरे पास सरप्लस रहा, किसी दिन यूज कर लूंगा मैं. सी यू ऑन मंडे फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. बाय बाय. एंजॉय संडे. एंजॉय मैच. अच्छा हो गया मैंने 2 घंटे के लेक्चर रखे, तो ये एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी ना.